Now we move on to the another important case related to the CBC interpretation. Yes, try to identify this case now. This is a 10-year-old male child, 10-year-old male child, and presentation of the child is he is looking very pale, almost all chalky white. Child is almost all chalky white, बहुत pale. He complains of pallor since few months. He is having pallor since last few months. And child is also complaining, mother is also complaining of breathlessness for last 20 days and also puffiness and edema of the feet since last 5 days. Puffiness and edema of the feet since last 5 days. Look at the case very carefully. Pallor is plus plus, puffiness is also plus plus, but liver and spleen is not much palpable, and there is not even a lymphadenopathy. So what is your understanding now? 10-year-old male child looking very pale and chalky white pale, pallor since few months, breathlessness developed since last 20 days. There is also puffiness or edema since last 5 days. Pallor is plus, puffiness is there, liver spleen not palpable. What may be the case? 10 साल का बच्चा है तो इम्यून रिलेटेड मैकेनिज्म्स 10 साल के बच्चे में कॉमन है, हो सकता है. पेल है बच्चा, डेफिनेटली एनीमिया इज देयर. ओके, RBC is not up to the mark definitely, but we don't know what is the cause, whether it is a bone marrow cause, whether it is a deficiency cause, whether it is a hemolytic cause, or whether it is a hemorrhagic cause. We don't know that. But what is more worried is breathlessness. Child has developed breathlessness. And why child developed breathlessness? सांस लेने में क्यों उसको दिक्कत हो रहा है 20 दिन से, कुछ महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है, 20 दिन से सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, that was quite interesting. And puffiness is also there. Any idea? Okay, look into the baby. This is chalky white. Okay, now this is the CBC report. HB is 6 grams. MCV is 88. MCH is 29. RBC 4 million. RDW is given. Red cell distribution width RDW 12. Below. Reticulocyte 1%. Peripheral blood smear. Normochromic, normocytic. Okay. WBC is 7,655. Polymorphous 40, lymph 60. Platelet 2.3. And serum creatinine was also done, that is 4.5 milligrams. Any idea? पहले तो RBC indices देखो and give your result. According to RBC indices, what is it? What it is? MCV कितना होना चाहिए? 90. So it is 80, that means almost all normal. MCH कितना होना चाहिए? 30. It is 29, almost all normal. Okay, RBC होना चाहिए 5 million. So that is about 4 million, थोड़ा बहुत कम है. RDW होना चाहिए 14 to 17 का बीच में, it is about 12. Okay, now by these 5 parameters, HB is 6 grams. So what do you think? क्रिएटिनिन तो लास्ट में देखेंगे, पता नहीं वो क्यों की है क्रिएटिनिन. MCHC नहीं दिया है, बट ऑलमोस्ट यही सेम रेंज में होगा, वो भी 31 होगा, क्योंकि HB दिया है ना, HB 6 grams. So anemia is there, and this is looks like for us it looks like, but RBC एनीमिया उसको है, एनीमिया होने के लिए 1000 कास हो सकता है, बट क्या है कि आपको लगता है कि RBC का साइज कम होगा इसमें, इस पिक्चर के साथ? नहीं सर, RBC का साइज तो सही लग रहा है, क्योंकि MCV सही है, MCH सही है, ठीक है. यस, तो उसके बाद हमने PBS किया. PBS में नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया आ गया. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. नाउ पेलर इज देयर, ठीक है, पेलर इज देयर, डेफिनेटली चाइल्ड इज हैविंग 6 ग्राम, पेलर इज देयर,
बट पीबीएस इज शोइंग अगर हाइपोक्रोमिक नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक कुछ दिखा है तो हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं या आयरन डिफिशियंसीमिया है या थैलेसीमिया है या जो भी कुछ है, मेगलोब्लास्टिक है, जो भी है. बट हियर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक है. आरबीसी का साइज और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो सही है. इसके बाद भी जो है चाइल्ड इज हैविंग पेलर, इसके बाद भी चाइल्ड इज हैविंग पेलर. और उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी इज 7655, डब्ल्यूबीसी 7655 बड़ा है, ज्यादा है, सही है, ये क्या है? तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? हाँ, 8 to 10,000 के आसपास, ठीक है. सो नाउ इट इज लेस. पॉलीमॉर्फस 40 है और लिम्फोसाइट 60 है. ओके. प्लेटलेट्स 2.3 लाख है, वो भी कम है. Platelets are 2.3 compared to the normalcy. It is also less, and serum creatinine is about 4.5. Now, the question comes: this type of picture you find in so many cases. You find this type of picture. The pallor is there, but normochromic, normocytic. So what to do? समझ में नहीं आता है. Now, whenever you get normochromic, normocytic picture, okay. So now you go for this analysis. Then the things will be clear. अच्छा. ओके, देखेंगे. दिस इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक विद द नॉर्मल आरडीडब्ल्यू. ओके, आरडीडब्ल्यू 12 है, थोड़ा बहुत कम है, ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल मान सकते हैं. सो क्या हो गया? नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एंड इवन आरडीडब्ल्यू इज ऑल्सो नॉर्मल. सो व्हेन दिस इज द केस, सो हाउ टू प्रोसीड? ओके, व्हेन दिस इज द केस, हाउ टू प्रोसीड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस एक्चुअली. When we have normocytic normochromic anemia with the normal RDW with very low reticulocyte, एक जो हमने मिस किया है रेटिकुलोसाइट शुड बी मोर देन 2%, बट रेटिकुलोसाइट थोड़ा कम है. सो व्हेन ऐसे रेटिकुलोसाइट कम है तो उसका मतलब है आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम है, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन का डेवलपमेंट का ये एक फेस है, रेटिकुलोसाइट है. हाँ, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि एचबी भी कम है और यहाँ पे वो आरबीसी काउंट भी कम था, है ना. आरबीसी काउंट भी 4 मिलियन था शायद वो केस में, इस केस में, दूसरे केस में. हाँ, 4 मिलियन. आरबीसी इज 4 मिलियन. हाँ, आरबीसी इज 4 मिलियन. तो आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम है, तो हो सकता है रेटिकुलोसाइट का भी प्रोडक्शन इसलिए कम है. ठीक है. So, but important is when you get this type of picture where there is normochromic anemia, normocytic anemia with the normal RDW with a little low reticular, थोड़ा बहुत reticulocyte count low है. So now this is very important. We should understand two important things. दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए. What is that? You should not forget to see the blood pressure. Second is you have to look into hypothyroidism. So when you got this type of pictures, always keep in mind, ठीक है. So why इतना छोटा बच्चे में ब्लड प्रेशर क्यों देखना है सर? हाँ है, देखना है. I will tell that. Okay. So one is take the blood pressure and another one is look into hypothyroidism, because both these two conditions may lead to this type of presentation. This type of presentation. What is that? See, this is normocytic normochromic anemia picture. देखो आप, नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक है, इसका कलर भी सही है, साइज भी सही है. Okay. Now we come to the approach. What is the approach when there is a normocytic normochromic anemia with the normal RDW and with a little low reticulocyte count? Reticulocyte count थोड़ा बहुत कम है. सो नॉर्मल क्या है कि पहले आपको करना है कि रेटिकुलोसाइट काउंट है. जब आपको नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया का पिक्चर मिलता है, आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है, तो पहले आप यू गो फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट. इफ द रेटिकुलोसाइट काउंट इज नॉर्मल और इफ द रेटिकुलोसाइट काउंट इज डिक्रीज्ड, या तो रेटिकुलोसाइट 2 है या रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज है, देन यू हैव टू गो फॉर वन बोन मैरो एग्जामिनेशन. ओके, go for one bone marrow examination. Why? Because रेटिकुलोसाइट कम है और एनीमिया भी है. हो सकता है कि बोन मैरो का कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्टेम सेल्स नहीं है या और कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो डिसीज, बोन मैरो एनीमिया हो सकता है. सो गो फॉर वन बोन मैरो एस्पिरेशन. बोन मैरो टेस्ट करने के बाद यू फाइंड दैट बोन मैरो इज ऑल्सो नॉर्मल. स्टिल हमारा जो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरडीडब्ल्यू ये सब है, रेटिकुलोसाइट काउंट लो है. देन इट मे बी ए रीनल कंडीशन. व्हाट इज द क्राइटेरिया? Normocytic normochromic anemia.
RDW नॉर्मल, उसके बाद आपने क्या किया, रेटिकुलोसाइट काउंट किया, रेटिकुलोसाइट काउंट आपको आया नॉर्मल या थोड़ा बहुत डिक्रीज है, जैसे इस केस में है डिक्रीज है, तो आपने उसके बाद बोन मैरो किया, बोन मैरो नॉर्मल आ गया। अगर इस कंडीशन में ऐसे बोन मैरो नॉर्मल आ गया तो उसका मतलब है इट मे बी ए रीनल प्रॉब्लम, इट मे बी ए लिवर प्रॉब्लम, इट मे बी ए अर्ली पार्ट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, or it may be anemia due to any of the chronic inflammation, or it may be some endocrinal causes like thyroid का. Okay, this is we have to think, because जब bone marrow when it is normal, definitely it is not related to the bone RBC production. RBC का production के साथ कोई दिक्कत नहीं है. There is no history of hemolysis. Hemolysis होने का कोई history नहीं मिल रहा है. Hemolysis अगर होता तो definitely liver and spleen would have been increased. बाकी presentation आता, वैसे history नहीं है. ओके, और ब्लड पिक्चर भी वो इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो क्या सोचेंगे हम, तो वो हीमोलाइटिक भी नहीं है, बोन मैरो को प्रॉब्लम भी नहीं है, देन व्हाट इज लेफ्ट इज नाउ इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू रीनल, समथिंग रिलेटेड टू लिवर, समथिंग रिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और मे बी सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और सम ऑफ द एंडोक्रिनल प्रॉब्लम. सो दिस इज व्हेन अगर बोन मैरो नॉर्मल आ गया तो सपोज व्हेन यू डू द बोन मैरो, इफ इट इज एबनॉर्मल, इफ द बोन मैरो इज शोइंग एबनॉर्मल रिजल्ट्स, okay, then it is a bone marrow problem. Maybe bone marrow aplasia, hypoplasia, or maybe bone marrow infiltration like leukemia, maybe lymphomas, okay, maybe myelofibrosis, also melanocytic anemia, like this. अलग अलग bone marrow का जो condition है, bone marrow infiltration problem, bone marrow aplastic problems or hypoplastic problems may be there if the bone marrow is normal. So this is the approach when you find this kind of picture. आपको पेलर सिग्निफिकेंट चल रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पिक्चर में आ रहा है कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, तब आप क्या करेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे. अगर और RDW भी नॉर्मल है, तब आप देखेंगे कि रेटिकुलोसाइट काउंट अगर लो आया या नॉर्मल आया, आप बोन मैरो करेंगे. बोन मैरो भी नॉर्मल आया तो आप देखेंगे अलग अलग सिस्टम को, लिवर, हेपेटो, रीनल, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एंडोक्राइनल एक्सेट्रा. बोन मैरो एबनॉर्मल आ गया तो एकदम क्लियर है वो बोन मैरो का ही प्रॉब्लम है. दिस इज द अप्रोच. नाउ इन दिस केस, नाउ इफ यू सी इन दिस केस, इफ रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड, सो पहले हमने कहा से क्या देखा, रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल या डिक्रीज है, तो हमें ये करना है, मान लो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, RDW नॉर्मल है और रेटिकुलोसाइट काउंट आपने किया, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज है. रेटिकुलोसाइट काउंट अगर इंक्रीज हुआ है तो उसका मतलब है वो हीमोलाइटिक एनीमिया है, और इट में भी रिलेटेड पोस्ट एवरेज. रेटिकुलोसाइट इंक्रीज क्यों होगा, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज तभी होगा जब ज्यादा RBC का प्रोडक्शन हो रहा है. ज्यादा RBC का प्रोडक्शन कहां पे होता है, जब RBC का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, तो दैट डिमांड मोर एंड मोर RBCs. So reticulocyte count going to increase. Once the reticulocyte count is going to increase, आपको मिल रहा है, तो उसका मतलब है क्लियर है कि बोन मैरो का प्रॉब्लम नहीं है, because bone marrow is producing normal amount of the RBCs. Okay, therefore, if the reticulocyte count is increased, it suggests that it is neither a bone marrow problem. Okay, it is not a liver problem, not a chronic problem, or not a renal problem. This is simply an hemolytic pathology. किसी ना किसी तरीके से RBC का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, हेरिडिटरी कॉन्जेनिटल हेरिडिटरी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स में हो सकता है. सो व्हेन देयर इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ओके, जो पहले के स्लाइड में मैंने देखा था, बताया था आपको, जब आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर मिलता है तो ब्लड प्रेशर भूलना नहीं चाहिए. ओके, सो व्हेन देयर इज ए नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर, take the blood pressure of the patient and also look into the renal system. In this case, it is given that serum creatinine is 4.5 milligram. देखो, सीरम क्रिएटिनिन जरूरत से बहुत ज़्यादा बड़ा है. सीरम 0.6 से जो है 0.8 से जो है 1.6 तक रहता है नॉर्मल, बट इट इज़ 4.5 मिलीग्राम. ओके, सो नाउ हमारा जो ये सही था, क्योंकि रेटिकुलोसाइट यहाँ पे नॉर्मल था, डिक्रीज था, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया था, RDW नॉर्मल था, इसलिए हमने रेटिकुलोसाइट काउंट किया, वो डिक्रीज था, इसलिए हमने बोन मैरो किया, बोन मैरो नॉर्मल आया,
तो हमें सोचना था कि ये लिवर है, किडनी है, या इन्फ्लेमेशन है, एंडोक्राइनल है, एक्सेट्रा। अब हमने ब्लड प्रेशर देखा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है प्लस सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये डेफिनेटली ये रीनल प्रॉब्लम है. Some of the chronic renal problem is leading to this type of presentation. Because of the renal problem, there is acidosis. अब पता चलेगा कि बच्चे को breathlessness क्यों हुआ. Why there is a breathlessness? That breathlessness which appeared in the child since last 20 days, it is because of the slowly developing acidosis because of the renal problem. ठीक है, renal tubular acidosis की वजह से he developed breathlessness, which is the cause of breathlessness, and also little puffiness of the face due to oliguria. जो edema जो आ गया उसको, that is because of the oliguria. So cause of this particular normocytic normochromic anemia, okay, with the pallor with the normocytic normochromic anemia is now considered as some of the renal problem. So this is a chronic renal failure is the cause of this particular presentation. So this is how a simple CBC will going to lead you to a diagnosis one by one. Okay, so chronic renal problems, especially chronic हमारा जो vitamin D resistant rickets है. Okay, so when you get vitamin D resistant rickets, there is involvement of the kidney, renal rickets, we know that. So chronic renal failure, कोई भी chronic renal failure in adults also, when you go through this type of picture will be seen, chronic renal failure. Okay, so this is the case. So whatever the diagnosis, approach हमारे लिए बहुत important है, because many times in the CBC we find this question, this type of presentation, but we don't know how to proceed further. Okay, when you get a normocytic normochromic, now the things are very clear. When you get a normocytic normochromic picture along with the RDW normal, first you go for a reticulocyte count. Do a reticulocyte count. If the reticulocyte count is decreased or if it is normal, then we suspect some bone marrow problem, therefore go for bone marrow aspiration. If the bone marrow finding is also normal, now one thing is very sure, it is not related to bone marrow, something other than bone marrow is the cause, then go for the other systems. Meantime, if the reticulocyte count is increased, then RBC production is normal, demand is also more, therefore definitely it would be some of the hemolytic pathology. Hemolytic pathology. Okay, so this much you have to understand from this important case. That's all from this case.